So what is the purpose of lumbar puncture? इससे पहले देखते हैं कि what is lumbar puncture? lumbar puncture या रीढ़ की हड्डी का पानी निकालना, जो रेगुलरली that we say रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना, इसके बारे में हम आज कुछ जानते हैं. I am Dr. Gurneet Singh Sawhney. I am a senior consultant and head functional neurosurgery at Fortis Hospital Mulund, Mumbai. Now, what is lumbar puncture? Lumbar puncture is when we take out some CSF or the brain fluid from the spinal cord is called lumbar puncture. We do it from this place. We take a small needle and we introduce it and remove some part of the fluid. Now, this is the brain fluid that is called the CSF, Cerebrospinal fluid. Now, ये फ्लूइड हमारे पूरे सिर पे, ब्रेन के अराउंड, ब्रेन के अंदर और नीचे की तरफ होता है. Now, why do we have to take this out? Now, lumbar puncture से we get a lot of information about the brain condition. Now, if there is any infection in the brain, like meningitis or ventriculitis, now these are severe infections of the brain. इसका डायग्नोसिस हम लंबार पंक्चर से करते हैं. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर, बेड साइड प्रोसीजर, जो बेड के नज़दीकी हो जाता है, एंड लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से, और 5 मिनट के अंदर ये प्रोसीजर हो जाता है. सो कुछ कंडीशंस डायग्नोसिस के लिए लंबार पंक्चर किया जाता है, लाइक द इन्फेक्शन विच आई टोल्ड यू, एंड also to find out if there is any bleeding in the brain, we do lumbar puncture. For diagnosis of cancer, some cancerous condition, we do lumbar puncture. कुछ neurological conditions के लिए we do lumbar puncture to find out whether the conditions are there or no. So this is for diagnosis. There are some of the other features that lumbar puncture will help. Lumbar puncture helps in treatment of finding out some of the conditions of the brain. Now this is called normal pressure hydrocephalus, NPH. Now in this हम लोग large amount of fluid निकालते हैं, CSF निकालते हैं, about 30 to 40 ml, and once we see that after removing this much of CSF, patient की condition improve हो गई, then it is called a therapeutic lumbar puncture, जो 30-40 ml होता है. एक बार lumbar puncture हो गया, so उस जगह पे सिर्फ ड्रेसिंग लगाई जाती है, कोई स्टिच और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, एंड आगे पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्ट और ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. पेशेंट को हम थोड़ी देर के लिए फ्लैट सुलाते हैं एंड द थिंग्स आर डन. सो इट इज़ नथिंग दैट नीड्स टू बी रियली वरीड अबाउट दिस स्मॉल प्रोसीजर, एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसीजर. थैंक यू.